Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter Earth and its neighbors. In previous class we have studied about our planet Earth, that is at third position, third closest planet to the sun. It is also called blue planet or the water planet. Then we have studied about satellite. Satellite is an object that revolve around a planet. So moon is the our natural satellite, and artificial satellites are those that we send, that are man made, that revolve around our planet, and they are helpful to transmit signals for telephone communication, okay, television signals, etc. And Aryabhat is the first Indian satellite, artificial satellite. Understood? In today's class we will study about motion of the earth. The earth moves on its axis. The axis is an imaginary line that passes through the center of the earth from north to south, and it is slightly tilted. Okay, the topmost tip of the earth is called North Pole. At its other end, directly opposite to the North Pole, lies the South Pole. The equator is another imaginary line. It divides the earth into two parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere. So let's understand with the help of the picture. So you can see it is not a line, okay, it is an imaginary line that we have imagined this line. So earth is revolving like this, okay, like this around its axis. So this is the axis, which is an imaginary lines, and the earth is rotating around this line. Understood? This line is not straight, this is little tilted. Tilted means, suppose this is the axis, but it is not straight, it is like this, so it is slightly tilted. Okay, so here you can see axis is tilted like this and earth is rotating. Now what is an equator? So let me show you with the help of a diagram. So suppose this is our earth. So it is an imaginary line that divides the earth into equal parts, okay, so it is an equator. Understood? Now here it is called the North Pole. It is called North Pole. North Pole. And just opposite of this, here comes the South Pole. Understood? And this is the equator which divides earth into two equal parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere. It is the northern pole and it is the southern pole. Understood? So it is given that earth moves around its axis. Axis is an imaginary line which is slightly tilted. The topmost tip is called the North Pole. The opposite of it is called the South Pole. Here comes an imaginary line which divides earth into two equal parts. Okay, first is the northern hemisphere, which is towards north. Then comes the southern hemisphere, which is in the south direction. Two different motions of the earth, rotation and revolution, account for the occurrence of day and night and the different seasons. So two types, one is rotation and second comes the revolution. Okay, that in one the earth is rotating around itself, and another the earth is going from different places around, it is moving, it is revolving around the sun. Okay, so rotation and revolution, because of these two motions means movement, the day and night occur and different season like winter season, summer season occurs. Okay, because of rotation and revolution. Understood? Rotation and revolution. So
Let's read about rotation. The earth rotates on its axis like a top. The movement of the earth on its axis is called rotation. The earth takes 24 hours to finish one rotation. Day and night are caused due to the rotation of earth. So I have already told you that this is the axis, okay, which is slightly tilted, which is not straight, it is little like this. So it is tilted. Now it is moving around this uh, like this. It is going like this. Okay, it is revolving around this imaginary line, and because of this, it takes 20 in one day. How many hours are there? 24 hours. So it takes 24 hours for Earth to complete one rotation, and because of this, day and night occurs. Understood? This is the north pole, this is the south pole, this is the axis, which is an imaginary line, and the earth is rotating, and because of this rotation, day and night occurs. Now comes revolution. Revolution. The movement of earth around the sun is called revolution. The earth rotates as well as revolves around the sun along its orbit. One revolution is completed in 365 1 by 4th days. This time period is called a solar year. Now this is the sun, okay, and all the planets are revolving around this sun. So because of the motion, movement means motion, of our planet earth around this sun, it is called revolution. And because of this revolution along this orbit, orbit means the fixed path, seasons occur. Okay, so to complete one full revolution, it takes 365 1 by 4 days. Okay, and this is called solar year. So 1 year. Understood? Now because of this revolution, seasons occur. So let's understand that. There are two factors which cause season. First, the revolution of the earth and the tilted axis of the earth. Tilted axis, this imaginary line. Different parts of the earth tilt towards or away from the sun during one revolution of the earth. When the north pole is towards the sun, it is summer season in the northern hemisphere. The days are hotter at this time because the sun rays fall directly during this time. It is winter season in the southern hemisphere. So it is very easy. Look at the given diagram. This is tilted. Okay, so the axis is quite tilted. So that part which is closer to the sun, okay, at that part the sun is closer to that part. Okay, and if sun is closer during that time, summer season will be there. During summer, what happens? Days are very hot. Why? Because the radiation from the sun is directly falling. That's why summer, during summer the days are very hot, because sun rays are falling directly. And suppose if northern hemisphere is tilted towards the sun, then it will be summer in north and winter in another pole. Understood? When the north pole is turned away from the sun, it is winter season. So now January is there now. That means we are away from the sun. That's why winter season. Okay, the days are colder, so you can see that nowadays days are very cold. Okay, and shorter also. It is summer season in the southern hemisphere at that time. So when in if northern hemisphere there is summer, then in southern it will be winter, and vice versa. Vice versa means opposite. The sun always shines directly on the equator, so places near the equator always get a lot of sunlight. They are always very hot. So equator
you all know that what is an equator. I have already shown you. Equator is an imaginary line which divides the earth into two equal parts. Like if this is our planet earth, okay, this is the equator, imaginary line, okay, it is the equator. So the sun rays, okay, it always fall directly, means I have shown sun very short, but for your understanding only, sun rays always fall directly on the equator. So there is no winter season in equator, okay, days are always hotter, uh, always hot, okay. Now आज की क्लास में हमने जो है पढ़ा कि जो अर्थ है वो दो, उसके पास एक जो है वो अपने अराउंड, जैसे आपने एक लट्टू देखा होगा, वो कैसे घूमता है, अपने अराउंड चक्कर काटता है ना, और ऐसे भी चक्कर काटता है, ठीक है। तो ये एक एक्सिस होती है, देखो यहाँ पे एक्सिस दिखा रखी है ना। एक्सिस का मतलब एक इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड धरती घूमती है। ये स्ट्रेट नहीं होती है, थोड़ा सा टिल्टेड का मतलब झुका हुआ होता है, ठीक है। तो वो अपने अराउंड चक्कर काटती है, उस अपने अराउंड चक्कर काटने को क्या कहते हैं, रोटेशन। जब धरती अपने अराउंड जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड चक्कर काटती है, ठीक है। अब जो धरती होती है उसका जो ऊपर का हिस्सा उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और उसके अपोजिट में साउथ पोल आता है। और एक इमेजिनरी लाइन होती है जो धरती को इक्वल पार्ट में काट देती है, ठीक है। जैसे सर्कल में डायमीटर होता है ना, उसी टाइप में उसको इक्वेटर कहते हैं। ऊपर वाले हिस्सा जो नॉर्थ के पास है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। जब धरती अपने अराउंड घूमती है तो उस घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, 24 घंटे का टाइम चाहिए होता है। अब 24 घंटे में जो है वो उसी से दिन और रात डिसाइड होता है। क्यों, देखो ये हमारी धरती घूम रही है, ठीक है। तो अब ये घूमी तो पहले ये सूरज की तरफ था, तो सूरज की तरफ होगा तो क्या होगा, यहाँ दिन होगा। अब घूमते घूमते उस साइड चली गई तो दूर सूरज से दूर हो गया, तो उस डायरेक्शन में क्या होगी, रात होएगी, देखो है ना। और जो जिस साइड सूरज का मुंह होगा, फेस होगा, उधर दिन होगा, ठीक है। ऐसे डे और लाइट आता है, अंडरस्टूड। तो एक दिन एक पूरा चक्कर काटने के लिए अपने अराउंड, ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड 24 घंटे का टाइम लगता है। और अपने अराउंड चक्कर काटने की वजह से ही दिन और रात होती है धरती पे, क्योंकि एक बार एक फेस सूरज के पास होगा और एक फेस सूरज से दूर होगा। जो पास होगा वहाँ दिन होगा, जो दूर होगा वहाँ रात होगा। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो जिस कॉर्नर पे आप बैठे हो ना, मैं जहाँ पे भी आपका कंट्री आता है उस एरिया वो सन के टूवर्ड्स फेस कर रहा है, इसलिए दिन है, ठीक है। और जब सन से दूर चला जाएगा तो रात हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका दूसरा मोशन। मोशन का मतलब बच्चों मूवमेंट, ठीक है, गति। दूसरा आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब सभी प्लैनेट धरती के अराउंड चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। इस मोशन को क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। इससे सीजन होता है। जैसे एक बार तो धरती सूरज के पास में होती है तो पास में होगा, ठीक है, और एक बार दूर चली जाती है तो उससे मौसम होता है। अब एक पूरा चक्कर काटने के लिए इसको कितने दिन लगते हैं, 365 1/4 डेज लगते हैं, ठीक है। यानी कि 1/4 का मतलब एक दिन का 1/4 हिस्सा। इसको सोलर ईयर कहते हैं और इसी की वजह से सीजन होता है। अब सीजन का मतलब मौसम, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, ठीक है। तो दो फैक्टर है, एक तो रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब जो सूरज के अराउंड चक्कर काटना। दूसरा ये टिल्टेड एक्सिस, यानी कि जो ये थोड़ा झुका हुआ एक्सिस, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। तो आप ये समझो कि जब सूरज के पास होगा ये नॉर्थ पोल, मान लो, ठीक है, अगर नॉर्थ पोल सूरज के पास हुआ, सूरज के पास होने से क्या होगा, गर्मी होगी। गर्मी का मतलब समर सीजन। समर सीजन किधर, नॉर्थ पोल हेमिस्फीयर में। नॉर्थ का उल्टा कौन सा होता है, साउथ। तो साउथ में अगर नॉर्थ में समर है तो साउथ में क्या होगा, विंटर होगा, ठीक है। अब गर्मी
क्यों समर सीजन में सूरज के पास होने की वजह से दिन कैसे होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्टली फॉल हो रही है, ठीक है। इस साइड तो नहीं फॉल हो रही डायरेक्टली, इस साइड हो रही है, तो इधर समर होगा, इधर क्या होगा, विंटर। फिर धरती घूमेगी, ठीक है, घूमती घूमती दूसरी साइड आएगी, तब अगर नॉर्थ पोल, ठीक है, अगर दूसरा हेमिस्फीयर सूरज के पास होगा तो वहाँ पे गर्मी होगी और दूसरे में सर्दी होगी, ठीक है। तो अभी कोल्ड है, विंटर सीजन है, तो हम इसका मतलब हमारा जो भी पोल है वो धरती से दूरी पर है, या इसलिए यहाँ पे सर्दियाँ है और दिन छोटे हैं, ठीक है। अब जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर मैंने आपको बता दिया, उसमें हमेशा ही देखो इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर का मतलब जो ये इमेजिनरी, ये जो धरती को इक्वल पार्ट में काटती है, तो वहाँ पे तो हमेशा ही गर्मी होगी, क्योंकि वो वहाँ पे हमेशा डायरेक्टली सनरेज जाती है, इसलिए, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा क्या होगी, गर्मियाँ होंगी। सो टू थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट. Rotation is responsible, and for season revolution is responsible. So I hope you understood today's class. Please read this chapter at least 2 times, okay. Thank you so much. Have a nice day. Bye.